प्रॉब्लम होगा, मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकते हैं। वो एक बार हो चुका है ना मेरे साथ, इसलिए ये सब अब डाल नहीं रहा मैं वीडियोस। तो ये तो आदित्य मना कर रिकॉर्डिंग स्टार्ट ହେଲା। हाँ, आदित्य मना करे ना कि सर अपन देखंतुनी हमको, तो इसलिए नहीं हम लोग अपने लिए रख लेंगे, क्योंकि ये सेम साइट बाद में मिलना मुश्किल होता है। जी सर, जी सर। The malaria parasite is an ancient organism. It has been with us since before we were human. Famous victims include Alexander the Great, Genghis Khan, and George Washington. The malaria life cycle follows a devious path, swapping back and forth between mosquitoes and humans. This mosquito is infected with the malaria parasite. Because she is pregnant, she has become hungry for human blood. During the bite, she injects saliva to stop the blood from clotting. Her infected saliva also carries the malaria parasite. The parasite rides the bloodstream like a network of roads, seeking its first target, the core of your body's blood filter system, the liver. Sensing its arrival at the liver, the parasite searches for an exit. A sentinel Kupfer cell is the entry point to liver tissue. Leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear divisions, copying its DNA over and over again. A single infected liver cell can create thousands of new parasites. The next generation of parasites are modified to infect a new target: red blood cells. Inside a red blood cell, the parasite can hide from the body's immune system. The parasite slowly devours the contents of the infected cell and creates more parasites. The infected cell becomes sticky and grips onto blood vessel walls. Once mature, the infected cell bursts, spreading more parasites through the bloodstream. Malaria victims suffer fever, loss of blood, convulsions, brain damage, and coma. Countless millions have been killed by it. Most people who die from the disease are pregnant women and children under the age of 5. क्लियर हुआ है? यस सर, आ रहा है। Yes, sir. गुड वीडियो। Mosquitoes are usually vegetarian, preferring to drink nectar, fruit juices, and honeydew. Only a pregnant mosquito will bite humans, seeking nutrients from blood to nourish her developing eggs.
If she drinks blood from someone infected with malaria, she too becomes infected with the disease. The tiny drop of blood filling the insect's stomach is teeming with malaria parasites. The parasite form that is deadly inside humans cannot survive in the mosquito's stomach and is slowly digested with the rest of her blood meal. However, back in the human host, a few of the parasites turned into a different type of cell, one that is sexual but remains dormant. Malaria sex is triggered when the warm human blood begins to cool inside the insect's stomach. The female form of the parasite matures into an egg. The male form takes a while longer to mature into sperm. This sperm is from an earlier feed. The fertilized cell can glide and begins to explore its new environment. It migrates to the outer lining of the mosquito's stomach before transforming into a cyst. Each cyst produces thousands of thin, tiny parasites which seek out and infest the mosquito's salivary glands. The next time this mosquito bites a victim, the malaria parasite will ride in with her saliva and infect another human. आगा मजा. Yes, sir. गुड एनिमेशन, बट अभी भी कंटेंट में डेफिशिएंसी तो है. हाँ सर. तो फिल्म बट एनिमेशन बहुत अच्छा था, नो डाउट. ग्राफिक्स बढ़िया था। बहुत पूरा अच्छा. फिल्म में हाँ बोलो. सब फिल्म तो चल रहा है. हाँ. चलिए. तो वही चीज है बेसिकली. मैंने ये लोग वीडियोस ग्राफिक्स वाफिक्स बना लेते हैं ना, तो अच्छा दिखता है. और क्या 3D imaging है इतना पर. हाँ, तो एटा तो हमने दी टिके साहाଯ୍य कर पारंत, आमे भी कर दियंते. तो वैसे है. हाँ, और बोलो. समझ में आया? तो इसलिए सेक्सुअल साइकिल जो है, तो हमने देखा सर बहुत जिनस खाई दउचंती स्टेप पूरा. चलिए. सो एक्चुअली इंडियंस लोग ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं ना. फॉरेन लोग क्या है, दे आर मोर मेनली सुपरफिशियल. उनका टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होता है. चलिए. सो दे आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी. सो वैसे और क्या. चलिए. सो अब जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल आएगा, तो इसमें हमारा स्टेप 1 क्या होता है. स्टेप 1,
तो स्टेप 1 में क्या होगा? माइक्रो गैमेटोसाइट्स, ओके, स्टार्ट टू प्रोड्यूस क्या? माइक्रोगैमिट्स ब्रैकेट रे मेल, ओके, माइक्रोगैमिट्स बाय एक्स फ्लैजेलेशन, है कि नहीं? उस प्रोसेस को एक्स फ्लैजेलेशन बोलते हैं। नाउ उसके बाद उसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मेगा, ओके, तो माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मेगा गैमेटोसाइट स्टार्ट टू प्रोड्यूस क्या? मेगा गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स, ओके। तो ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2, ओके, fertilization of male and female gametes to form a zygote, okay. This zygote changes shape and starts to move. This moving zygote is referred to as क्या? Ookinete. Hela? Step 3. Ookinete goes and settles down in the क्या? Stomach lining of the mosquito and undergoes cyst formation, ओके। तो उसको हम लोग सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। नाउ अब ये सिस्ट फॉर्मेशन क्या होगा? नाउ दिस सिस्ट इज कॉल्ड, एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड oocyst, है कि नहीं? फॉर्मेशन, द cyst mother cell is known as oocyst, ठीक है। Now step 4, oocyst undergoes sporogony to produce क्या? इस प्रोसेस को हम लोग गैमेटोगोनी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोगोनी एंड ये वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोगोनी, टू प्रोड्यूस स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप 5, sporozoites start moving away from the stomach wall and enter into the salivary glands, where they infect, okay, them. So life cycle comes to a halt till the sporozoite
finds a new क्या healthy human host. ठीक है, तो ह्यूमन होस्ट, तो ये हमारा स्टेप्स हो गया अबाउट प्लाज्मोडियम। कुछ पूछना है बताइए। सर जो हॉल्ट हुए सर সেটা जो टेम्परेचर पे हुए माने सा? बॉडी टेम्परेचर क्या से जो स्पोरोजॉइट रे मस्कीटो रे स्पोरोजॉइट रे हॉल्ट ही जाए नहीं नहीं से नहीं, সেটা तो उन लोग का ये सब अगर आप डिटेल्स जानोगे तो आप जानते हो कि लाइफ साइकिल क्या है, उसके बाद वो उधर नहीं कर सकता है कि नहीं। अब जैसे तुम्हारा लाइफ साइकिल तुम्हारे घर में नहीं होगा, तो यू हैव टू गो टू ससुराल, तब तो लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा ना, वरना अनिशा विल रिमेन अनिशा। तो जब तक ससुराल नहीं जाओगे, अब नेहा कक्कड़ को देखो 5 दिन हुआ नहीं शादी के, प्रेग्नेंट हो गई है कि नहीं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो ससुराल गई, तो समझ रहे हो। तो इसी तरह से देर आर डेफिनाइट फिजियोलॉजी, ये तो हम लोग बताते नहीं है क्योंकि वो सब डिटेल्स है ना, वो सब डिटेल हम लोग को भी नहीं मालूम होता है, बिकॉज वो जो इसके बारे में डिटेल पढ़ा होगा वो जानेगा कि ऐसा क्या फीचर है, नॉट ओनली टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। तो इसलिए उस तरह से टेम्परेचर इज नॉट द ओनली फैक्टर। और बोलिए। सो इसलिए अभी हम लोग को जितना है, बिकॉज दीज आर एंडलेस टॉपिक्स, है कि नहीं। अगेन आप दोबारा उस डायग्राम को देख सकते हैं, फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मेल, ये जो मस्कीटो है एंड ये, तो इसीलिए जनरली जिसके बॉडी में प्राइमरी, जिसके बॉडी में सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है उसको हम लोग प्राइमरी होस्ट कहते हैं। तो यहाँ किसके अंदर होता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल? मस्कीटो। मस्कीटो। दैट इज व्हाई मस्कीटो को हम लोग प्राइमरी होस्ट कहते हैं एंड ह्यूमंस को हम लोग इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। चलिए ठीक है, सो टेक रेस्ट एंड एंजॉय, वी विल मीट नेक्स्ट डे। तो इसलिए अभी ऐसा हो सकता है कि संडे वनडे कुछ एग्जाम हो आपका, ओके, तो इसलिए रेडी फॉर मैसेज। गुड नाइट।